Jai Shri Krishna. जय जय श्री श्री Welcome to कृष्ण। कृष्ण, Sanat. जय राम जी की, जय राम जी की। Jai सत श्री Shri Ram. अकाल। जय बजरंग बली की, जय भोलेनाथ, शिव शिव शंकर। जय श्री शंकर। Okay, Welcome to Sanatan Shakti. Today I thank have you. great pleasure in introducing Lord Rami Ranger, who is member of House of Lords in UK and has been bestowed with many awards from the Queen herself. Welcome to Sanatan Shakti, sir. Thank you for having me. It's a वेलकम great लॉर्ड्स, honor for me. वेलकम टू Thank you, सनातन शक्ति। Nilesh. Nilesh ji, thank you very much. You work also very hard and you keep chasing me. I can never hide, but I can run. Because He is going to run you after are you, such an sir. inspiring figure, Lord. You can inspire people, and that is the reason I'm chasing you. We are very lucky that we have a over 5, 6, 7, 8,000 old civilization. We became poor because we were Sone ki chidiya, which attracted a lot of invaders. So they came and they looted, they plundered. Then we were colonized, and when you are under a power of a foreign power, their main interest is to look after their interest. So they are not interested in the development of India or whatever. So they took all the wealth, all the resources from our country to their country. So anyway, we are very lucky that we got independence through the sacrifices of so many people who paid supreme sacrifices for centuries. They kept on struggling. Their love for Mother India was greater than the love for their own family and their own self. People like yesterday was the Bhagat Singh, Sukhdev, and Rajguru's, Martyrdom. martyrdom day. And it just shows how young these people were and how big dream they had to liberate their Mother India, and they did. Today I wish they were with us, they were enjoying, but wherever they are, they know they will never die. They will always be in our hearts, and people generation after generation will celebrate their lives. Like a flower, a फूल की लाइफ बहुत छोटी होती है, लेकिन उसकी खुशबू, उसकी ब्यूटी चार्म और सबको भा जाती है, सबको खुश करके जाती है. Similarly, these martyrs, the शहीद जो थे, even though they were with us for short time, but their fragrance, their legacy is with us for generation to come. Ji. Sir, I want to ask you my one question. There, one film which was released recently, Kashmir File, has become a movement in itself, at least in India. It is getting raving reviews from UK also. I want to know how people in UK are reacting to this film and why are they reacting in this way. Vijeta ji, this is not a film. It's a piece of history, a very dark history of Mother India when the government of that day let the citizen of India down. They did not provide security because the main role of the government is to protect the citizen. They have to have protection to go about their daily life unhindered. If the government fail in providing you security, what is the use of that government? Tell me, if I'm dead tomorrow, what is the use of that government? The government has to protect its citizens at any cost, at any cost. So whoever pulled the wool over the eyes of leaders have to be brought to justice. There has to be a proper inquiry, independent inquiry. This is not a party political issue or a religious issue. It is an issue of the lively lives of Indian citizens, those who were neglected and they were killed, they were brutalized, women raped, and they were forced to leave their countries. And in a 21st century, this is totally not acceptable. Let's hope and pray that this film has opened our eyes, opened our mind, and has brought home the stark reality, horrible reality that we went through in 1990s when our fellow citizens who belonged to India, who aspired to be Indian, were let down and they had to suffer in isolation alone
when we are such a big 1.3 billion people. We are a very powerful country with economy going, number four, fifth in the world, army number three or fourth in the world, and we just let these people face, die, convert, or leave. This is not a slogan I want to hear in my country, which aspire to be the champion of human rights and democracy in the world. So, therefore, lessons have to be learned, and we have to redraw our policies that the lives of citizens, each and every citizen, is very important. I'm also very disappointed that when our soldiers are killed by terrorists, we don't retaliate like the Israelis do. You kill one soldier, we kill 10. That's how we have to now. There is a proverb, Ram har janam mein paida hua, Lakshman nahi hua. There's no point being a Ram if you don't have Lakshman in front of you. If you have a Ravan, then you have to deal दैट काइंड ऑफ पीपल अकॉर्डिंगली. अगर आगे से हमें प्यार कोई करेगा तो हम प्यार डबल देंगे. हमारी तो सभ्यता ऐसी है कि हमारा तो कोई कोई मेहमान आ जाए उसकी हम प्यार करते हैं. इंडिया has opened the gates to every kind of refugee. Starting 2000 years ago, the Jews came to India, Parsi came to India, Sikhs came to India. You name it. I mean, Afghan Sikhs have come, people from Pakistan. Our doors are open to give shelter to people who are victim of religious hatred. And I think this film, if I'm not wrong, will be the catalyst of change. The Muslim leader must see this film and then tell their people, rise above the rest of merit, use education, use qualification to get something. Do not use religion coupled with violence. By smash and grab, you don't go far. So, therefore, my message to all the Muslim leaders is, don't think this is a propaganda film. Don't think we are trying to spread hatred. We are only trying to spread education. We are only trying to tell you what is good for your community in the future. Give them a leadership like the Sikh people. We are Sikh. In COVID, we were giving langar, food, shelter to people regardless of race, religion. We were not checking what is your religion. That is the strength of a religion, that you serve humanity. You don't spread hatred. You bring your own religion into disrepute. आज सरदारों की कितनी प्राइम मिनिस्टर तक जय जयकार कर रहे हैं सारी दुनिया में. The Sikh community has been recognized for their charitable humanitarian work. I think that is leadership. In 1947, we suffered 100 times, maybe 1,000 times worse what the Kashmiri pundits say. But thank God, now we have social media. We can now see, with the help of internet, videos, the TVs, and all that, what goes on. In 1947, there was nothing. 1 million people were massacred. Tens of millions of people became refugees in their own home. The picture brought my own story. When my father was assassinated, my mother came as a widow with 8 children in a refugee train, helpless, and straight to refugee camp. How we started our life. Each and every life is important. माँ बाप बच्चे को जन्म देते हैं, कितनी उम्मीदें होती हैं उनकी. हाउ मच एस्पिरेशन दे हैव कि मेरा बच्चा, मेरी लड़की, मेरा लड़का बड़े होके क्या बनेंगे. आज वजीता जी आप बैठे हो एज ए रोल मॉडल गर्ल, कंट्रीब्यूटिंग to society. So, therefore, मेरी माँ ने एज ए वुमेन 8 बच्चे पाले, 5 ब्रदर इंडियन आर्मी में कमीशन ऑफिसर बने, 3 लड़ाइयाँ लड़ी, उन्होंने जंग लड़ी फॉर द इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया. फादर डाइड फॉर द यूनिटी ऑफ इंडिया. मैं यहाँ, मेरी भी आग में ज्वालामुखी भड़क रही है मदर इंडिया के लिए. मेरा दिमाग कहते हैं तन मन और धन. हमारा तन जहाँ भी है, यूके में है, जो धन है कहीं बैंक में है, लेकिन मन हमारा इंडिया में. हमेशा हमें इंडिया की खबर आनी चाहिए. अच्छी आती है तो हमें बहुत खुश होते हैं, गलत आती है तो हमें बहुत दुख होता है यहाँ. तो ये पिक्चर, मैं तो उनको सलूट करता हूँ जिन्होंने इतना करेज, क्योंकि आजकल तो डर लगता है कि फनेटिक कैन किल यू इफ यू डोंट डू व्हाट दे टेल यू टू डू. बट द करेज मिस्टर अग्निहोत्री, विवेक अग्निहोत्री एंड हिज टीम showed is a landmark in the history of India.
may I will tell more and more people, more film producer, more Bollywood star to take issues which are very important for the safety security of Indian citizens, which will make our country strong. And there should be picture of corruption, and there should be so many things we should be doing to make our country strong and strengthened. And women empowerment is very, very important. As you can see, we are celebrating Year of Women. There should be Year of Women. Every day should be remember the Day of Women, because women do a lot more than they get credit for. No society can progress when keeping the women behind. How can you move forward when half of your body is left behind? I made a business success because my wife was standing shoulder to shoulder with me. Wife, my wife watched my back. If I had to watch my back, I couldn't watch my front. So she gave me so much strength. How can you turn asset into liabilities? Because she went to work, she brought income. I was able to give my children private school education. Today, one is going to be member of parliament. Second is a gold medalist doctor, consultant. Third, work for the scholarship from uh, London School of Economics. So the women are playing a very important role, in the world, and we must make sure that they are given full strength. And let me give you one more example. जी If a husband, empowerment of women is a necessity, not a choice. If a बिल्कुल सही husband, if a husband dies prematurely, like my father did, he will leave behind a woman unable to look after his children, wife, mother, and woman unable to deal with the world. ना माँ बच्चों को संभालेगी, वो जाके मदरसों में या किधर इधर, they will be in a horrible places. And if my mother was not educated, I would be cleaning shoes or maybe serving, in a restaurant somewhere. So thank to the power of women. So I think the film, we have to really make sure that everybody sees. There's a very deep message, and this film, I am very optimistic, will change the mindset of people who think that they can get away with spreading hatred, violence, and bloodshed. India will have a zero tolerance for that kind of people, and Modi ji is providing that strong leadership which we need, which we get in, with the blessing of Almighty. That we got a leader who puts the interest of India first and before else. So I wish the government, present government, every success, that they should continue to strengthen India, the security of India, invest in all the surveillance equipment, all the cameras, all these things, so we can be a very safe society. जी सर आपने दो तीन बातें बहुत अच्छी कही एक आपने जब कह रहे थे कि Sikhs have been in the forefront when it comes to giving back मैं I want to share something during COVID when people refused to touch the deceased who had died from COVID. There was one gentleman in Delhi. He has been given Padam Shri right now. He's a Sikh gentleman. Right now, I'm forgetting his name. I know He, he's a doctor. He's a doctor. वो PhD डॉक्टर है सर हाँ हाँ ऑनररी फिर PhD मिली है अच्छा 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 उनको मेरी तरह हाँ हाँ, अरे नहीं सर हाँ। तो उन्होंने 100 से अधिक लोगों की अंत्येष्टि की विच इज सो मतलब उनके सामने तो शत शत नमन है जिस तरह से उन्होंने मैंने काम उनकी किया वीडियो देखी, विजेता जी, मुझे रोना आ गया। कहता बच्चे अपने माँ बाप की लाश को टच नहीं करना चाहते थे कि आ, ये रोगी है, ये मैं रोगी उनको लाश है। मिली मैं अगर आप चाहें तो मैं आपको उनसे मिलवाऊंगी आई मुझे कॉल यू ऑन वन ऑफ द शोज हाँ हाँ, इट बी वेरी आई नाइस। नो हिम देखो आई नो हिम देखो, हम सिख रिलीजन बढ़ा नहीं, नंबर नहीं बढ़े, वी आर ओनली हाँ 330 मिलियन, बट इट्स हाँ क्वालिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी। यस यस, बिल्कुल हम बिल्कुल भारत को बिल्कुल हर तरह से, देखो ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब से, जब हमारे, हाँ हम अमेरिका से लेते थे PL47 होते, पता नहीं क्या, आप तो बहुत यंग है ना, मेरे टाइम में हाँ हमें अमेरिका से दूध मिलता था स्कूलों में, हमें कणक मिलती थी, क्यों हमारे वो इतना हमारा अंग्रेजों ने हमें खत्म कर दिया था इकोनॉमी जी को। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया पंजाब से, अभी देखो हमारे कंट्री में कोई भूखा नहीं रहता है जी। बिल्कुल वी तो हैव उसके सरप्लस बाद फौज देखो, फौज फौज में कितना है, लेस देन 2% है, 20% फौज में है, क्योंकि भारत की रक्षा करना
सबसे इम्पोर्टेंट है। आज़ादी की संघर्ष में भी इन्होंने पूरा योगदान दिया। आप देख लिए काला पानी में कितने गए, फांसी पे कितने चढ़े, स्पोर्ट्स में जी देख लें, बिजनेस में देख लें, क्योंकि हमें मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि हमारे लीडर ने कभी ये नहीं कहा कि तुम इसके करो, यस, अपना करो कि रिलीजन खुद को को यूज ही करो, बस। हेटरेड से यूज करो, ये करो वो करो। उन्होंने कहा सेवा करो, दैट्स द बिगेस्ट टेनेट ऑफ रिलीजन, एंड यूनाइट करो, हेटरेड मत बोलो, दैट इज द होल थिंग। मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगी, फिर नीलेश भाई आपसे पूछेंगे। ठीक है। इस फिल्म में दो जगह एक बहुत अच्छा डायलॉग था। एक था कि जब वो प्रोफेसर बोलती है कि क्या हुआ अगर सरकार उनकी है, सिस्टम तो हमारा है। हाँ हाँ, और बिल्कुल ठीक एक है। जगह और एक जगह जब वो बोलते हैं कि ऐसा क्यों कि जूस हाँ के होलोकास्ट सबको याद है और कश्मीरी पंडितों की कहानी किसी ने नहीं बोली। तो फिर वो बोलते हैं कि किसी ने सुनने की कोशिश ही नहीं की। तो ये जो दो बहुत पॉइग्नेंट सीन्स हैं इस पिक्चर के, हेलो, इनको आप जरा थोड़ा कंटेक्सचुलाइज करके बताएं। ब्रिंग इट ऑन, ब्रिंग इट, या। सो एनीवे, देखो, द फिल्म इज सो शॉकिंग। कहते ना, सम टाइम आदमी नींद में सो रहा है, तो हम सो रहे थे, तो इसने हमें एक शॉक दे के जगाया है कि अगर हम होश नहीं करेंगे तो ऐसे कांड और भी हो सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें अभी चाहिए, होश आनी चाहिए, और ये उनको भी दिखाओ जिनकी लीडरशिप देखो। हमारा जो सिख रिलीजन है वो पाकिस्तान में रह गई, ये जगह जहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ननकाना जी साहब, गुरुओं का बर्थ प्लेस भी पाकिस्तान में रह गया है। जब हम 1947 में 350 हिस्टोरिकल गुरुद्वारे, बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, जहाँ गुरु अर्जन देव शहीद हुए, जहाँ गुरु नानक देव जी जहाँ से वो चले गए अपनी स्वर्ग में, वो भी हम छोड़ के जब आए, तो हमारे लीडरों ने ये कहा कि उसको भूल जाओ, आपके पास गोल्डन टेम्पल है, तुम यहाँ पूजा करो और छोड़ दो। अगर वो हमें कह देते तुम सुसाइड बॉम्बर बनो जब तक ननकाना साहब लिबरेट नहीं होता, तो आज भी हम रिफ्यूजी कैंप में रहते जैसे पैलेस्टीनियन रह रहे हैं। उन्होंने कहा, पैलेस्टीनियों ने, इजराइल को ख़त्म करना है, तो वो ख़त्म करते करते आप ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि वो जनरेशन ऑफ जनरेशन, हमारे कश्मीर में भी generations of generation have lost their future because of the poor leadership and the support from across the border। ये वो टेररिज्म देते हैं उनको। सो देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमारे लीडरशिप को जो है ना, उनको बिठाइए, उनको द लीडरशिप हैज टू रियली चेंज द थिंग। यू का हाउ लॉन्ग कैन, अगर मेरी आपने प्रॉपर्टी छीन ली, मेरी फैक्ट्री खरीद ली, कौन चलाएगा, कौन उसको है? कश्मीर तो ले लोगे, उसको रन कौन करेगा? पाकिस्तान का हाल देख लो ना क्या हो रहा है। यस। जी तो आपको चाहिए, अगर सारे हिंदुस्तान पे राज करो भैया, पर लेकिन मेरिट से करो, क्वालिफिकेशन से करो। कौन रोकता है आपको? आप बनो। फिल्मी इंडस्ट्री में देखो कितने मुस्लिम काम कर रहे हैं, उनको कौन रोकता है? बिल्कुल। म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सिंगर हैं, एक्टर्स हैं, सबको है जी। हमारी कंट्री गवर्नमेंट में भी है, कौन रोकता है? मिलिट्री में भी है, कौन रोकता है? स्पोर्ट्स में भी है, अजरुद्दीन वाज द कैप्टन, कौन रोकता है? लेकिन जो स्मैश एंड ग्रैब हेटरेट से करोगे तो सब कुछ लूट जाओगे। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। यस। नीलेश भाई, ओवर टू यू। लीडरशिप को लीडरशिप को जोड़ो और उनको ये फिल्में दिखाओ। जी Lord, welcome to the Sanatan Shakti. Today, I want to ask you a very important question. You being from Punjab, and you know, like back of your hand, Punjab very well. तो पंजाब में जो भी आम आदमी पार्टी बहुमत से जीत के आई है, वो उसके बारे में आप क्या कहोगे, और बाद में वो खालिस्तानियों को जो बढ़ावा देंगे उसके बारे में आपका क्या कहने का है लॉर्ड? नीलेष जी, ये पार्टी जीती नहीं, दूसरी पार्टी वाले हार गए हैं, क्योंकि इलेक्शंस आर वन व्हेन द अदर गाय लूजेस। अगर ये नवजोत सिद्धू, सिद्धू। जो जो मिसेस सोनिया गांधी की
फेवरेट पॉलिटिशियन है, उसको पंजाब में ना डालते, दो बंदे पैरेलल खड़े करते, कभी एक कंट्री में दो प्राइम मिनिस्टर हुए? नहीं। जिससे सारी खेल उड़ी, सारा महाराजा पटियाला चला रहा था, सब कुछ ठीक था, ही वॉज एंटी खालिस्तान, सब कुछ कर रहा था, और उसके अगेंस्ट एक और बंदा खड़ा कर दिया टू अंडरमाइन हिम। यू डोंट अंडरमाइन ए लीडर, उसका रिपरकशन है। नंबर दूसरी, देखो, खालिस्तान के ख्वाब लेने और खा भी लो, रियलिटी में जो कुत्ते भौंकते हैं, काफिले चलते रहते हैं, वो कितने सालों से लगे हुए खालिस्तान बनने के, उनकी तो सारी जो मूवमेंट है खत्म हो गई है। और मुझे आज किसी ने कहा कि इनको कोई प्रेस, कोई मीडिया वाले, कोई हमारे जैसे आदमी इनको कोई वैल्यू ना दो, इनको इग्नोर कर दो, ये खुद ही नेचुरल डेथ मर जाएंगे अपनी। हम इनको देते हैं ना इम्पोर्टेंस, तो ये इनको लाइफ मिलती है। सो मेरे लिए, मेरे भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू इग्नोर देम, कि सिख गुरु इंडिया के लिए थे, उन्होंने कुर्बानी पंजाब के लिए नहीं दी। गुरु तेग बहादुर का जो बिहेडिंग हुआ था, शहीद हुए थे, वो दिल्ली में हुए थे, कैपिटल में, इंडिया के क्या, वो कोई अमृतसर में नहीं हुए थे, जलंधर नहीं हुए थे। गुरु गोविंद सिंह पटना में पैदा हुए थे। पांच प्यारे जिनसे उन्होंने खालिस्तान बनाया, वो पांच कॉर्नर ऑफ इंडिया से आए थे टू शो एज ए यूनिटी। कभी उन्होंने, जब गुरु गोविंद सिंह झगड़ा कर रहे थे मुगलों के साथ, वो किसी किंगडम के लिए नहीं कर रहे थे, वो ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरी इंडियन, वो अपने लिए कुछ नहीं कर रहे थे। सो देयरफॉर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये मिसगाइडेड सिख है, ये जरा लीडर बन जाते हैं, इनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई ना अच्छी जॉब है, ना कोई अच्छी बिजनेस है, ये चौधरी बन जाते हैं और पॉलिटिशियन उनके पीछे लग जाए कि हमें वोट मिल जाएगी। सो मेरे भाई, इनको बिल्कुल टोटली इग्नोर करो, जूते पड़ेंगे जो उनके साथ हैं, उनको भी और उनको भी। ये भी हमारी नेक्स्ट जनरेशन को खराब कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं कि इंडिया में रह के ही सबको फायदा है। यूनिटी ऑफ इंडिया इज गुड फॉर एवरीबॉडी। लुक एट दी अपॉर्चुनिटी यू हैव, लुक एट दी, वो 2% सिख हैं, वो आर्मी से सब छोड़ के आ जाए, कहाँ खिलाओगे उनको? यूपी में सिखों के पास कितनी जमीन है, कहाँ खिलाओगे उनको पंजाब में? और जो हाईजैक करना चाहते हैं सिख गुरुओं को फॉर हैंडफुल ऑफ खालिस्तानी, उनको पूछो कि गुरु आपको माफ करेगा? गुरु ने हमें यूनिवर्सल टीचिंग दी है, जिसमें दुनिया को वननेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, नाम है मानस की जात सब एक पहचान वो, हम एक हैं सब। गुरुओं ने कभी किसी से वितरण डिफरेंस नहीं किया। गुरु ग्रंथ साहब में जाके देखो, हिंदुओं की बाणी है, सिखों की बाणी है, तो अगर आप हिंदुओं से इतनी नफरत करते हो, पहले बाणी निकाल दो ग्रंथ साहब से। Thank you so much for being with us today. आप म्यूट है सर, आप अनम्यूट करिए। हाँ, थैंक यू फॉर हैविंग मी, एंड वी विल जॉइन अगेन। थैंक यू We सर, जी can सर, थैंक यू फॉर thank you स्पेयरिंग so योर much. टाइम।